तो हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ लिकर यू कैन ईजिली स्टॉक एट योर होम लीगली। हाँ जी, आप लोगों को लगता है कि शादी ब्याह में जो हम ड्रिंक वगैरह का जो अरेंजमेंट करते हैं, जो लिकर का अरेंजमेंट करते हैं, वो कि कितने भी नंबर ऑफ बॉटल्स रख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ जी, ये इलीगल है। कुछ स्टेट्स में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ स्टेट्स में परमिशन नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ नंबर ऑफ बॉटल्स फिक्स की हुई हैं कि वहाँ पर आप कितनी बॉटल्स को एज ए स्टॉक रख सकते हैं अपने घर में। तो अब हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप इन विच स्टेट हाउ मेनी बॉटल यू कैन स्टॉक एट योर होम विदाउट एनी ओकेजन। इफ़ देर इज़ एन ओकेजन देन यू विल हैव टू टेक परमिशन। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू एक्साइज एक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, वहाँ पर हर किसी एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो बोतल की लिमिट्स है वो डिफरेंट है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट 7 स्टेट्स। हाँ जी, हम 7 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बात करती हैं कि हाउ मेनी बोटल्स यू कैन कीप एट योर होम फॉर योर ओन पर्सनल यूज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हरियाणा। हाँ जी, इन हरियाणा 6 bottles of country liquor, and second is that 18 bottles of foreign liquor made in India, and third one is that 12 bottles of beer 650 ml each, and 4 bottles, and fourth point is that 6 bottles of rum 750 ml, and fifth is that 12 bottle of wine, and six is that 6 bottles of vodka gin cider 750 ml. हाँ जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राजस्थान। इन राजस्थान यू कैन होल्ड 12 bottles और 9 लीटर ऑफ IMFL। हाँ जी, बट इन केस ऑफ डोमेस्टिक पार्टीज एंड इन केस ऑफ कमर्शियल देयर शुड हैव बी ए परमिट लेटर। तो जो लाइसेंस कैन बी ब्रॉट फॉर ₹2000 प्लस टैक्सेस फॉर डोमेस्टिक पार्टीज एंड 1000 plus taxes for commercial parties. हाँ जी, and now let's come on the state of UP. The limit is capped at 1.5 liter of country made alcohol and 1.5 liter of IMFL and 4 bottle of beer. हाँ जी, now let's talk about the UT Delhi. 18 liter of wine, beer, cider and alcohol, and 9 liter of Indian and foreign liquor, whiskey, rum, gin, vodka at home or for parties. Now let's talk about Goa. 12 bottles of IMFL, 24 bottles of beer, 18 bottles of country liquor, and 6 bottles of the denatured and rectified spirit in home. And in violation of these rules and regulations, accused can be imprisoned up to 7 years, or which can be extended more than 7 years, and the minimum punishment would be there 6 months. हाँ जी, इन वायलेशन ऑफ द रेगुलेशन मिनिमम पनिशमेंट वुड बी 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ जी, जो स्टेट ऑफ पंजाब है वहाँ पर जो एक लिमिट है वो है 2 bottles ऑफ IMFL and 1 case of beer 650 ml and 2 bottles brought from abroad of any size 1 liter or 5 liter, or one case 650 ml of beer. And the third one is the 2 bottles of country made liquor and 1 bottle of brandy. Now let's talk about the state of Himachal Pradesh. 36 bottles of whiskey and 48 bottles of beer are permitted as person in the state of the Himachal Pradesh. तो फ्रेंड्स, ये आज हमने इस वीडियो में बात की है कि नंबर ऑफ बॉटल्स यू कैन स्टॉक एट योर होम फॉर योर ओन पर्सनल यूज़ in these numbers. Otherwise you will be in jail if you break these rules to their own enjoyment and the enjoyment of others. Thank you so much for visiting. In the next video we will discuss about the some of the
other states.